हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशनल प्लाजा। एजुकेशनल प्लाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर क्लास 7 ज्योग्राफी बुक DAV स्कूल ज्योग्राफी SST बुक ज्योग्राफी चैप्टर first lesson components of environment. So in this video I will discuss question answer of all the part A, part B, part C, part D and part E. So you subscribe the channel, and if you find the video useful I request you please like it, and how the content was beneficial to you. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, यूज़फुल लगता है, स्टूडेंट्स को उससे मदद मिलती है, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ यूज़फुल then please press the like button, give your comment if you face any kind of problem. So here first of all we can see multiple choice questions, in which first question is which one is not a part of biological environment. Not a part of, which is not the part of biological environment. The plants, animals or human, they are the part of biological environment. Only water is not the part of biological environment. Water is non-living things, physical element. Volcanoes erupt due to, first is internal disturbance. Of course यही होगा आंसर, internal disturbance ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर जो उथल पुथल होता है, जो डिस्टर्बेंस होता है, उसके चलते जो एनर्जी ऊपर की ओर आता है, दैट इज वोल्केनो एरुप्शन. सो हियर यू हैव सीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट A1 एंड पार्ट 2. नाउ आई विल सी पार्ट 3. विच वन ब्रिंग्स अ सडन चेंज इन द एनवायरमेंट. विच इज सडन चेंज, अचानक. इट इज रेनफॉल. Rest all A, C, D, they are gradual change, slow process change. Formation of river, growth of a plants, formation of mountain, they take time. But rainfall you have seen, sudden comes. So what is here example of sudden change in the environment? That is rainfall. So here you have seen rainfall. Now we will move to fourth question, A4 then A5. Here A4 you can see here A4 identify the terms that stands for the topmost layer of earth comprising of loose material. अर्थ सरफेस पर topmost layer अर्थ का जो loose material है, that is of course soil. Minerals, it is inside. Sial Sima, it is inside. Only loose material on the earth surface is soil. And when was Wildlife Protection Act passed? Question number 5. Of course it was passed in 1972. So B is your answer. So this way multiple choice questions I have finished. Moving to next question. Next question I will discuss part B. Now we are going to discuss part B. Give a single term for each of the following sentences. Here is question and answer together. You can see here. A situation or condition in which an organism lives, that is called environment. The only planet in our solar system where life exists. Planet, स्फीयर नॉट. अगर स्फीयर रहेगा तो बायोस्फीयर. नाउ हियर इज ओनली प्लैनेट, दैट इज अर्थ. अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का ऊपर का हिस्सा, रिच इन सिलिका एंड एल्युमिनियम, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम एलिमेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट इज शाल. और द स्फीयर ऑफ एयर दैट एनवेलप द अर्थ, वह स्फीयर जो अर्थ को चारों ओर से एयर से घिरे हुए है, एटमॉस्फेयर, गैसेज ऑफ स्फीयर ऑफ एयर, दैट इज एटमॉस्फेयर.
Right answer is atmosphere. So fourth answer, first answer environment, second answer earth, third answer shell, fourth answer atmosphere, and of course fifth will be ocean. Mass of water on the earth's surface, that is ocean. This way I have finished part B. Now moving to part C. Matching here. You can see here matching. Physical environment includes non-living things. Physical environment includes non-living things. It is the most dynamic, सबसे ज़्यादा important, most dynamic is atmosphere. So first you have seen physical environment includes non-living things. Second here atmosphere, narrow zone supporting life. Narrow zone supporting life here, that is biosphere, where life living thing exist. They are capable of modifying environment, जो environment में change लाने की क्षमता रखता है, capacity रखता है, that is human beings. And last is here rocks rich in silica and magnesium, that is Shima. So these are the matching. Match the following questions, C part. Any problem? I hope there should be no problem. In different colors I have shown you here. Moving to next part, D1, D2, D3, D4, D5. One by one. D1 here question. Answer the following questions in brief. Name the major components of environment. Biological environment, physical environment. Physical environment example you can give land, water, soil, rocks, etc. Biological environment example you can give human beings, plants, animals, etc. So it is D1. Moving to D2. Here you can see D2. What is meant by Shima and Shal? Shima and Shal. The rocks rich in. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आता है. The rocks rich in silica and magnesium is called Shima. It is generally found. कहाँ पाए जाते हैं ये rocks? Below the bottom of the ocean basin. और यहाँ पर shell, the uppermost part of the lithosphere is composed of rocks. कौन सा rocks? जो rich in silica and aluminium is called shell. So here you can see Shima and Shell. If the question is asked Shell and Shima, then second one will be first and first one will be last. Here is Shima and Shell, so that has been written. Moving to next part, D3. Mention the distribution of water in the northern and southern hemisphere. 43% of total area of water is found in 43% in northern hemisphere and 57% in southern hemisphere. इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 43% पानी पाया जाता है और इक्वेटर से साउथ पोल साउदर्न हेमिस्फीयर उसमें 57% वाटर इज फाउंड. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, D4. Here you can see D4. Give the literal meaning of the four spheres of environment. The lithosphere means a sphere of rocks. यहाँ पर आप देख सकते हैं a sphere of rocks. Atmosphere. Atmosphere means a sphere of air. Hydrosphere means a sphere of water. And the word biosphere means, बायोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है? द स्फीयर ऑफ लाइफ. सो हियर यू कैन सी दिस ऑल द फोर मीन्स. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट,
D5. What is the atmosphere composed of? Here you can see the atmosphere is composed of a mixture of gases which forms an envelope around the earth. Of the total mass of the atmosphere, एटमॉस्फेयर का 99% जो गैस है, जो एयर पाए जाते हैं, वो धरती के सरफेस से 32 किलोमीटर हाइट के बीच एग्जिस्ट विद इन 32 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी अगर हम ज़्यादा 32 किलोमीटर से आगे अगर हम हाइट में चढ़ाई करते हैं तो एयर क्वांटिटी विल डिक्रीज। दैट्स वाई माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ते समय आप देखे होंगे जो पहाड़ पे पर्वतों की चोटी पे चढ़ाई करते हैं, दे आर कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन देयर बैक। सो हियर आई हैव डिस्कस्ड दिस वे डी पार्ट। मूविंग टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हियर। लॉन्ग आंसर E1 you can see, differentiate between the physical and the biological environment. The physical environment includes non-living things. Physical environment means non-living things, like example are here given, this one. Biological environment includes all living things, example plants, animals. दूसरा भी आप एग्जाम्पल चाहें तो लिख सकते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एलिमेंट, but biological element can bring change in physical environment. That you can write. Moving to next question, E2. Here you can see E2 part. Why is Earth called the blue planet? Very important question. So many times this question has been asked. The planet Earth is called the blue planet. Why? Why it is called blue planet or water planet? Because of large amount of water present on its surface. The earth surface is occupied by 71% of water. चूँकि धरती पे 71% पानी है और 29% लैंड, ज़मीन। तो अर्थ को जब स्पेस से देखा जाता है, व्हेन वी सी द अर्थ फ्रॉम स्पेस, इट लुक्स लाइक which color it looks in, which color it looks blue. Why it looks blue? Because of abundance of water, large quantity of water is found on its surface, for that reason. Moving to next part, E3. Here is E3 question. Define बायोस्फीयर, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस। बायोस्फीयर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको ज़रूर तैयार रखिए अपने एग्ज़ाम के लिए। नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल द अदर 3 स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट्स मीनिंग इज स्फीयर ऑफ लाइफ, sphere of life, SPHERE, here missing है sphere. Human beings are important part of the biosphere because human have capacity to bring change, to modify. They are capable of changing it. So biosphere का सबसे important element कौन है? तो human beings, मनुष्य। This way E3 completed. Now moving to E4. Explain with the help of example how physical and biological components of the environment are interdependent. Dear students, physical environment or biological environment means physical and biological components are not separate, they are interdependent.
means they are depend on each other. Any major change in physical, here you can see any major change in physical environment is to bring change in the accompanying biological environment. अगर फिजिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट में चेंज होता है तो उसका इफेक्ट बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे पड़ेगा. अगर एयर पॉल्यूट होता है तो लिविंग थिंग्स पर उसका इफेक्ट पड़ता है. वाटर पॉल्यूट होता है, लिविंग थिंग्स पर उसका असर होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन सन, वाटर एंड एयर फॉर इट्स सर्वाइवल. अब फिजिकल एनवायरनमेंट भी इनडायरेक्ट रूप से बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है. कैसे? फॉर द यूजेज, फॉर देयर कंजर्वेशन, फॉर देयर प्रिजर्वेशन. अगर सॉइल को, फॉरेस्ट को हमें बचा के रखना है तो ह्यूमन स्टेप लेते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, प्लांटेशन कार्यक्रम चलाते हैं. कंजर्वेशन ऑफ वाटर प्रोसेस, प्रिजर्वेशन प्रोसेस, मिनरल्स कंजर्वेशन, ये सारे स्टेप लिए जाते हैं ह्यूमन के द्वारा. सो हियर यू हैव सीन दिस. नाउ लास्ट E5. एक्सप्लेन 2 ways in which human beings are disturbing the natural environment. किस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है ह्यूमन? तो ह्यूमन आर डिस्टर्बिंग नेचुरल एनवायरनमेंट इन वेरियस वेज, कई तरीके से, जिसमें पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन. Establishment of large number of industries has created many type of problems, especially pollution problems like air pollution, water pollution, sound pollution, etc. Cutting of trees, that is deforestation. It has resulted in global warming and other ecological problems. Human activities in which humans are using plastic, polythenes, other toxicating materials, which are also causing severe health problem and environmental problems. So this way, students, we find that we human have or are disturbing the natural environment in various ways. So this way I have finished all question answer of this chapter. So I hope this video will help you in writing your question answer, in clearing your doubt. Some more question answer from inside and map question I will discuss in another video. Thanks for watching. I hope this video will help you a lot in preparation of your exam, in writing question answer, understanding the answers of the questions, because I have explained also. If you find the video useful, please press the like button. If you have not subscribed, please subscribe it. Also press the bell icon so that you can get notification regularly. You also give comment. How is the video content? Useful or not? What type of changes you want? That's all. Thank you. Thanks for watching. Love you all. Bye bye. Take care.